skills you will learn to replace them: chest compressions and rescue breaths. First, we'll focus on mastering each skill individually. Then you'll learn how to link them together to perform CPR. If the heart stops, it is possible to restore at least some blood flow through the circulatory system by way of external chest compressions. The most effective chest compressions occur with the rhythmic application of downward pressure on the center of the chest. External compressions increase pressure inside the chest and directly compress the heart, forcing blood to move from the heart to the brain and other organs. To perform proper compressions, the person needs to be positioned on her back on a flat, firm surface. Kneel close to the side of the chest. Place the heel of one hand on the center of the chest. Place the heel of your other hand on top of and parallel to the first. You can interlace your fingers to help keep them off the chest. Bring your body up and over the person so your shoulders are directly above your hands. Straighten your arms and lock your elbows. Using your upper body weight, push straight down to a depth of at least 2 inches. Lift your hands and allow the chest to fully rebound to its normal position. Move immediately into the downstroke of the next compression. Continue compressions at a rate of at least 100 times per minute. Always compress fast and deep when performing compressions. Without losing contact, allow the chest to fully rebound at the top of each compression. Blood pressure is created and maintained with well-performed compressions. If compressions stop, pressure is quickly lost and has to be built up again. Minimize any interruptions when doing compressions. When compressing properly, you may hear and feel changes in the chest wall. This is normal. Forceful external chest compression is critical if the person is to survive. चेस्ट कंप्रेशन में एक सिक्योर प्लेस पे बंदे को प्लेस रख दीजिए. ओके, क्लोज टू द विक्टिम्स चेस्ट. नी पोजीशन पे होना है ऑल द टाइम. यू हैव टू बी. अभी मेरे पास डमी नहीं है एक्चुअली. आई जस्ट फॉरगॉट. डमी मेरे पास है, मेरा एक हस्बैंड को लेके, लेकिन इनके पास नहीं. मैं डमी लेकर आता. जस्ट आपने ये नी पोजीशन पे. ओके, ऑल द टाइम आपका नी पोजीशन पे होना है. लॉक योर एल्बोज, स्ट्रेट योर हैंड्स अबव द चेस्ट है ना. स्ट्रेटली आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. हेड उसके यहाँ पे विक्टिम आना चाहिए. ओके, राइट इन द मिडल ऑफ 2 निपल्स. यहाँ पे एक चेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं. उसमें आपका हील ऑफ द हैंड स्ट्रेटली रखना है. उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके 30 times per minute. Sorry, 30 times in one circle. कितना है? 30 times in one circle. Should be 2 inches deep down. And speed कितना होना चाहिए? At least 100 times per minute. तो हमारा one circle कितने टाइम में कंप्लीट होगा? जब 100 times per minute है. 30 chest compressions. 20 seconds. 17 to 18 सेकंड में एक सर्कल 30 टाइम्स कंप्लीट हो जाता है हमारा चेस्ट कंप्रेशन का. 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट, एयरवेज. For giving rescue breaths, you need to make sure there is an open airway. The airway is the only path for getting air into the lungs. Someone who is unresponsive can lose muscle tone. If flat on his back, this can cause the base of the tongue to relax and obstruct the airway. This is the most common cause of a blocked airway in an unresponsive person. The tongue is attached to the lower jaw. Moving the jaw forward lifts the tongue away from the back of the throat and opens the airway. You can open a person's airway by using the head tilt chin lift technique. Place one hand on the forehead. Place the fingertips of your other hand under the bony part of the chin. Apply firm backward pressure on the forehead while lifting the chin upward. This will tilt the head back and move the jaw forward. Maintain the head tilt with your hand on the forehead. Avoid pressing into the soft tissue of the chin with your fingers, as this can also obstruct the airway. Leave the mouth slightly open.
एयरवेज को ब्रीथिंग देने से पहले क्या करना है, एयरवेज को ओपन करना है, क्योंकि जो हमारा टंग है वो एयरवेज को ब्लॉक करते हैं। कैसे ओपन करेंगे, चिन लिफ्ट विद हेड पोजीशन, ओके, यहाँ से ऐसे और नोज को पकड़ के ओपन द माउथ, ओके, नोज को पकड़ के क्लोज करके इस पोजीशन में, और माउथ को ओपन करके डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीथ भी दे सकते, कोई भी चीज, कोई भी बैरियर रख दीजिए, इवन हम टिश्यू भी रखते हैं उसमें भी ब्रीथिंग हवा जाती है, ओके। और आपके